Hello students, in the last class I discussed general characteristics of gymnosperm, along with that life cycle of pinus. So today I will be starting with the post-fertilization changes in the pinus. Now before starting with the post-fertilization changes, let's once again redraw. Before starting with the post-fertilization changes, let's once again draw the diagram for the ovule. So in the ovule, you know that this is nutritive tissue that represent nucellus. न्यूसिलस के आसपास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो मैंने यहां पर बनाई है, दिस इज इंटेगुमेंट, एंड यू नो दैट दिस इंटेगुमेंट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. एक इंटेगुमेंट है पर ये 3 लेयर्स के अंदर डिस्टिंग्विश्ड है. Yes, so this is outer layer, this is middle layer, and this is inner one. So outer layer, inner layer, they are thin and the middle layer is comparatively thicker. ये जो पार्ट यहां पर मैंने बनाया है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स माइक्रोपाइल, और जिस तरफ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, यू नो दैट दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, और इसके जो अपोजिट एंड है यहां पर, दिस इज चलासल एंड. राइट? नाउ इन द न्यूसिलस, due to the activity of the megaspore which I have discussed in the last class, there is formation of female gametophyte. तो ये मैंने यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म किया है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर these are female sex organs, that is आर्चिगोनिया. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है. फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये जो लोअर पार्ट है, यू नो दिस लोअर पार्ट इज नोन एज वेंटर, दिस इज स्वॉलन पार्ट. ये जो पार्ट ऊपर ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है, दैट इज नेक, शॉर्ट नेक इज प्रेजेंट. वेंटर के अंदर प्रेजेंट है एग, और एग के ऊपर प्रेजेंट है वीसीसी. सो वेंटर के अंदर ये मैंने दिखाया है एग, एग के ऊपर ये हम शो कर रहे हैं VCC, that is venter canal cell, and you know that in the gymnosperms, throughout the gymnosperms, the neck canal cells, they are absent. अब ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल पर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी और पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी.
pollen tube के अंदर बनेंगे male gamete. But as I have discussed in the previous class कि pollen tube formation होगी, उसके बाद unfavorable condition आने की वजह से the growth of the pollen tube is inhibited, so due to which the fertilization will occur after approximately 13 months. So जब favorable season आएगा, favorable season के अंदर pollen tube के अंदर बनेंगे दो मेल गैमीट्स. दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट डीजेनरेट हो जाएगा और दूसरा जो मेल गैमीट है, नाउ दिस मेल गैमीट इट विल फर्टिलाइज विद द एग, fertilize with the egg, so that now there is formation of diploid structure, that is zygote. So this I have studied, this I have discussed in the previous class. अब ये जो जायगोट है, इस जायगोट की डेवलपमेंट के लिए चाहिए न्यूट्रिशन. नाउ दिस न्यूट्रिशन इट इज प्रोवाइडेड बाय द फीमेल गैमेटोफाइट. द फीमेल गैमेटोफाइट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द embryo. It means the female gametophyte here, it works like nutritive tissue, or you can say it works like endosperm. अब ये फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो यहां पर जो एंडोस्पर्म है ये बनी इससे. दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है. अब ये जो एंडोस्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है कि ये फर्टिलाइजेशन के पहले का टिश्यू है? यस, एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्रेजेंट है. इट मीन्स हियर द एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटिंग प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू. इट इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का टिश्यू है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्री fertilization tissue, right? Now you will see what happened here. In the post-fertilization changes, the first change we can discuss for the zygote. Now this zygote, it will undergo development, results in the formation of embryo. ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक एंड दिस डेवलपमेंट इज endoscopic. It is very well known to you that meroplastic means that whole of the zygote, it will not form the embryo, only the part of the zygote is involved in the embryo formation. And endoscopic means the axis of the embryo is towards the inner side of archegonia. Inner means endo. So the axis of the embryo is towards the inner side. That's why this development is known as endoscopic development. Embryo के अंदर एक जो structure बनेगा, that is cotyledons. And you please keep this in mind, that in the case of the pinus, the number of the cotyledons which are formed, that is from 3 to 18. So this is one post-fertilization change. Now the second one. Now what is the fate of the ovule? Now after the fertilization, ovule is converted into seed. You know that for the first time the seed was formed in the gymnosperms. सबसे पहली बार जो सीड है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर फॉर्म हुआ है. ना ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है इंटेगमेंट. So let's see what is the fate of the integument here. Now the integument, it results in the formation of seed coat, protective covering around the seed, that is seed coat, and the integument, it will also form the wings of the seed.
So you please keep this in mind कि in the case of the pinus, both the pollen grains as well as the seeds, they are winged. दोनों के अंदर pollen grain as well as in the seeds there is presence of wings. अब इंटेगुमेंट से सीड कोट और विंग्स कैसे बनेंगे यहां पर देखिए, ये आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट, दिस इज मिडल लेयर एंड दिस इज इनर लेयर. नाउ द मिडल एंड इनर लेयर दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट. तो जो मिडल लेयर है दैट विल फॉर्म टेस्टा एंड द इनर लेयर इट विल फॉर्म tegmen. Middle layer testa, inner layer tegmen. Testa and tegmen, you know, together it represents seed coat. तो middle layer, inner layer utilize हो गई है for the formation of the seed coat. Now which layer of the integument is left? The layer which is left, that is the outer one. Now this outer layer is involved in the formation of wings of seed. तो wings किससे बनेंगे? Outer layer of integument plus some part of ovuliferous scale. So integument का outermost part and some part of the ovuliferous scale, they result in the formation of the wings. Now you can easily tell me here what is the ploidy of the wing. Yes, ये जो wing यहाँ पर बनेंगे इसकी ploidy क्या है? Now ये जितने भी टिश्यू यहाँ पर मैं बात कर रही हूं, all these tissue they are the part of parent body. Yes, they are the part of the parent body. Now the parent body is diploid. It is sporophytic. It means now the wings which are formed here, they are also diploid in nature. Now the next one, let's see now what is the fate of nucellus. तो ये जो मैंने यहां पर टिश्यू बनाया है, what is this? This is representing nucellus. ना जब ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, सो मोस्ट ऑफ द न्यूसिलस इज यूटिलाइज्ड. न्यूसिलस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. मोस्ट ऑफ द न्यूसिलस इज कंज्यूम्ड. ओनली पार्ट ऑफ द न्यूसिलस इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड. सिर्फ न्यूसिलस का कुछ पार्ट सीड के अंदर प्रेजेंट है. The remains of nucellus inside the seed, these remains known as perisperm. Remains of nucellus inside the seed, these remains, they represent perisperm. So it means we can say here कि gymnosperms के अंदर जो seeds हैं, here we are talking about the gymnosperm, that is the pinus. Pinus के अंदर जो seed है, these seeds they are endospermic. Endosperm present है. There is presence of perisperm, so you can say they are perispermic. और pinus के अंदर ये जो seeds है, these seeds they are winged, and these seeds they are naked. Around the seed, the fruit wall, it is absent. The naked seeded plants are the gymnosperms. Now, inside the seed of the gymnosperm, there is presence of 3 generations. So, gymnospermic seed के अंदर 3 generations logged है. There is presence of 3 generations. तो देखते हैं वो कौन सी 3 generations है यहाँ पर. तो सीड का एक जो पार्ट है that is seed coat, right? Another part of the seed is perisperm. Then one more part is wings. तो ये मैंने जितने भी यहां पर स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा है, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स दे आर
डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉयड. और ये स्ट्रक्चर किससे बने? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेंटल स्पोरोफाइट. यस, these structures, they are formed from parental sporophyte. So ये जो structures मैंने जिनका यहाँ पर नाम लिखा है, they will represent diploid generation. And which diploid generation? That is parental sporophytic generation. Now the second structure which is associated with the seed, that structure is endosperm. तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हैप्लॉइड है. यस, दिस रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमीटोफाइट. दिस इज हैप्लॉइड जनरेशन. तो सेकंड जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हैप्लॉइड गैमीटोफिटिक जनरेशन. नाउ द लास्ट पार्ट व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सीड, दैट द एम्ब्रियो zygote after the fertilization, it will be forming the embryo. Post fertilization changes के बाद zygote embryo बनाएगा. Here this embryo is diploid, right? Diploid है तो इसका मतलब कौन सी generation represent कर रहा है? Sporophyte. Yes, this is sporophytic generation. पर ये जो एम्ब्रियो है, ये जर्मिनेट करने के बाद अब ये बनाएगा न्यू प्लांट. Yes, this will form new organism. So this embryo, it will form new plant, new organism. So now you will call it as future sporophytic generation. तो 3 जनरेशन सीड्स के अंदर लॉक्ड है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेंटल स्पोरोफाइट. दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट. और एम्ब्रियो जर्मिनेट करने के बाद नया प्लांट फॉर्म करेगा. सो दिस इज फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन. नाउ इन द केस ऑफ द पाइनस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, for the maturity of female cone, you please write it, there is involvement or there is requirement of 26 months. जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन के अंदर सीड फॉर्म होते होते the time which is required, the time which is involved, that is approximately 26 months. So this is all about the life cycle of the pinus, about the post-fertilization changes in the pinus. Now after this, now I will be starting with the last group of the plant kingdom, that is the angiosperm, the most advanced group of the plant kingdom, that is the angiosperms. Now before starting with the angiosperm, I would like to add 2 more points about the gymnosperms. One, in the gymnosperms, the transfer of pollen grain का जो transfer है, it occurs with the help of air. It occurs with the help of wind. So you know this type of the pollination. This is known as anemophily. Now this was the transfer of the pollen grain. Let's see what is there. What condition is there with respect to the transfer of the male gamete. Male gamete का transfer किसकी help से हो रहा है? The transfer of male gamete, it occurs with the help of pollen tube. Yes, the pollen tube is involved in the transfer of the male gamete. And when the transfer of the male gamete, it occurs with the help of the pollen tube. Now this represents सिफोनोगैमी. तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इसको हम कहेंगे सिफोनोगैमी. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन हियर. पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर, not the male gamete,
male gamete is carried with the help of a tube. And what that tube it is? Pollen tube. So when there is involvement of the pollen tube for the purpose of the fusion of the gametes, now this process, this is known as siphonogamy. So now after this, we can start with the angiosperms. Angiosperms के अंदर there is presence of covered seeds. The seeds, they are present inside the fruit. Angiosperms, they are present in almost all habitat. हर तरह की हैबिटेट के अंदर ये जो एंजियोस्पर्म है ऑलमोस्ट ग्रो करते हैं. नाउ देयर इज लार्ज वेरिएशन. देयर इज लार्ज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एंजियोस्पर्म. ये जो सबसे इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है, it shows large variation with respect to the size. Now some of the angiosperms, they are tiny, they are microscopic. So for this we can write one example, that is Wolffia. But they can be also tall trees. Yes, they can be tall trees having the height of over 100 meters, over 100 meters of height. And for this example is eucalyptus. Now in the case of the angiosperms, the plant body, the dominant phase is represented by the sporophytic tissue. जो main phase है, dominant phase है, that is sporophyte, and this sporophyte, it possess true stem, root and leaves. जो haploid phase है, gametophytic phase है, the gametophytic phase is highly reduced. Gametophytic phase, highly reduced, only represented by the few cells. And just like the gymnosperms, here also the free living existence of these gametophytes is absent. So these gametophytes, they are highly reduced, represented by few cells, and the free living existence is absent. Right? Now in the angiosperms there is presence of well-developed vascular tissue. Well-developed vascular tissue is present. There is presence of xylem as well as phloem. Now in the xylem there is presence of tube-like structure, that is vessels. इसके साथ साथ present है tracheids, then xylem parenchyma and xylem fibers. Similarly, in the phloem, there is presence of again tubes. They are the sieve tubes. Sieve tubes, they are present. Sieve tube के आसपास present है help cells. So you know these help cells, they are known as companion cells. So the help cells which are present around the sieve tube, they are companion cells. Along with that, phloem parenchyma and phloem fibers. Now in the case of the angiosperm, there is presence of a very fascinating reproductive structure.
the fascinating reproductive structure which are present that represents flowers. So ये flowers की formation होती कैसे है? These flowers they represent aggregation of sporophylls. Yes. So flowers, they represent the aggregation of sporophyll, but please keep this in mind कि gymnosperms के अंदर जो sporophyll present है, they are woody, but in the angiosperm there is presence of delicate sporophylls. So these delicate sporophylls, they aggregate to form a fascinating structure in the angiosperm which represents flower. Now here I will be dealing with the life cycle of angiosperm, and in the life cycle I will be discussing the different components of the flowers, how the fertilization will occur and what is the life cycle pattern and at which stage meiosis will occur.